वेरी इंटरेस्टिंग. मेरे को दो चीज़ें समझ में आई इसमें. एक तो माई एक्सपेक्टेशंस इफ दे आर रॉन्ग, मतलब अगर मेरी अपने आप से एक्सपेक्टेशन गलत है देन आई विल मेक माई सेल्फ अनहैप्पी. द सेकेंड थिंग इज कि इफ आई एम टू यूज टू स्ट्रक्चर आई फियर द अनसर्टनिटी ऑफ लाइफ. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल जिस भी बंदे को, जैसे आपने वेस्टर्न वर्सेस इंडिया की बात की कि यार एक सिंपल सा एग्जाम्पल बड़ा प्यारा सा कि वही रोड क्रॉस करने वाला, वहाँ पे उनको आदत ही नहीं है कि यार रास्ते के ऊपर ऐसे हाथ दिखा के आगे जाना पड़ता है. वो बॉम्बे की रीलें बड़ी फेमस होती है ना कि अरे ए थाम्बा, ऐसे एक हाथ जो एक वो होता है ना कि नहीं. राइट. सो इट इज जस्ट लाइक कि वी आर, इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि हम ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं इन अ वे. सॉफ्ट से ज़्यादा हम लोग की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा स्ट्रक्चर एंड बीइंग ऑर्गेनाइज की जो नीड है ना वो बहुत बढ़ गई है. ठीक है. एंड इट्स गुड फॉर द सोसाइटी इफ सोसाइटी वांट्स टू ग्रो एंड डेवलप, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी कैनॉट कॉपी द मॉडल ऑफ वेस्ट एज इट इज़. वी आर वेरी डिफरेंट सोसाइटी, वी आर वेरी डाइवर्स सोसाइटी. देयर इज़ अ यूनिफॉर्मिटी बाकी सोसाइटीज़ में. मतलब पीपल लुक द सेम, दे स्पीक द सेम लैंग्वेज, द फूड इज ऑलमोस्ट द सेम. In India, you cannot expect these things, right? एक किलोमीटर में चेंज हो जाता है. Yeah, exactly. So वो जो diversity है ना, the diversity की वजह से हम लोग ऐसे हैं, and which is very good on the spiritual front, which is why India was always on top in the spiritual side, because spiritual side में ये चीज़ बहुत important बन जाती है आपके कि आप, because you're not just mind driven, you're driven by something which is beyond mind, right? Now what is beyond mind? Somebody call it like energy, somebody call it guidance, somebody call it soul, somebody call it God, right? Whatever you call it, but there's something beyond, and that guidance keep on guiding you. For I mean, if I have to give you some words for it in terms of like the spiritual sense, so we have this Pancha Kosha, right? So we have the first kosha, the layer of the physical body is the physical body. That's called Annamaya Kosha. Annamaya Kosha is words come from the word anna. Anna means food. The food we eat creates this body. Correct. Right? Now, the kind of food I eat will decide what kind of body I have. West भी मानता है, हम भी मानते हैं इस चीज़ को, right? So there is no argument on this front कि ये ऐसा नहीं होता नहीं. हर डाइटिशियन आपको यही बता रहा है. साइंटिफिकली. सेकंड पार्ट है आपका मनोमया कोशा. मनोमया कोशा इज योर मेंटल एंड इमोशनल बॉडी. ना मेंटल एंड इमोशनल बॉडी सेकंड लेयर है आपकी बॉडी का. जैसे मेरी थॉट्स एंड इमोशंस ड्राइव होती है. नाउ जैसी मेरी थॉट्स एंड इमोशंस होंगी वैसी मेरी बॉडी भी होगी. सो अन्नमया कोशा एंड मनोमया कोशा आपस में रिलेट करते हैं. इंटरकनेक्टेड. जैसी मेरी बॉडी होगी वैसे मेरा मन होगा, राइट? अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो मैं इस टाइम पे आई विल बी my thoughts will be different. Just to one small activity, okay? Done. If I ask you to just open your arms and look up and try to be sad. Right? Difficult? Yeah. Now bring your arms closer, look down and try to be sad. Tell me which one is easier. Yeah, down one. Down one, right? Because when you're unhappy, your body closes itself, right? Or can we say that when we close our body, it's easy for us to be unhappy. And sad, right? Yeah. Correct. So now what happens that when you open up, it's not just the body that's opening up, your mind is also opening up. Right? You dream bigger, you think bigger, you're more open to new ideas, but when you close yourself from the world. You don't want anybody to come into your life. You don't want to talk to anybody. That's what we call depression. That when you closed, you just want to be in your own shell. You don't want to have anything with the new things. You don't want to experiment. But when you open up, you're okay. When somebody says something bad, you're okay, more forgiving also, because this is what we call happiness in our line of work. We say when you're happy, your body opens up. So Annamaya Kosha and Manomaya Kosha are connected, that your body is connected to your mind and your mind is connected to your body. These two things are agreed very well in Eastern culture and in Western culture. But the third layer of the body is called Pranamaya Kosha. Pranamaya Kosha is your life force. We are alive because we have life force entering our body. Prana, right? So that's the third thing. It's like it's connecting these two. If the pranas are gone, these two are of no use. It's like a jam between a sandwich. Correct. So now other than this, so this energy now, if you talk about this in the West, there is a section of society which accept it, but there are section of society which do not accept it. But nobody can deny that it's not there. Even the science cannot deny that it's not there. There's something which is beyond, whether you call it prana, you call it life energy, you call it soul,
whatever you call it, Yeah. it's there, right? Yeah. Fourth one is called Vijnanamaya Kosha. Now those who have studied in Hindi medium, उनको पता है कि विज्ञान का मतलब होता है एक special kind of knowledge, right? Special kind of knowledge which is very unique for me and unique for you, which we receive it from somewhere. So ये जो special kind of knowledge है ना, this keeps us alive and this keeps us on a certain path. मेरे karmic structure के according वो information मुझे मिलती है. Is it related to prarabdha? It's kind of it's related to prarabdha and few more things, but it's the special kind of knowledge that drives my life, right? So prarabdha जैसे हम लोग लेके आते हैं हर कोई पैक, तो उसके अकॉर्डिंग भी मेरे को विज्ञानमय कोशा से I get the information, I get that knowledge that how my life should be. And the fifth one is the Anandamaya Kosha, which is the bliss body. Okay. Now this is why this is important for us to understand that it's not just my own thoughts that are creating my life. It's a life energy also that I am carrying. That's, deciding my life. And it's the information that I am receiving. And when we get into some kind of spiritual practices, the knowledge that comes to us, the Vijnanamaya Kosha brings something which is more of our, our use to us. I mean, in terms of as a human being on this planet. मैं इसको थोड़ा relatable बनाऊं ऑडियंस को समझाने के लिए. Yeah. The विज्ञानमय कोशा. Sure. So basically, when we connect it to prarabdha is basically, let's say, soul का destiny. आपने अपना प्रोफेशन चूज किया है, वो आपके इस बॉडी की डेस्टिनी है कि मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को जो भी बनना है, आई वांट टू वर्क इन सम स्पेसिफिक नीश, राइट? बट योर सोल इज प्री डिस्टिंट विद वन, लेट्स से, प्रारब्ध, कि जिसके लिए उसको कोई एक टूल लगेगा. जैसे लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अब्दुल कलाम, राइट? वेरी गुड ओरेटर, वेरी इन्फ्लुएंशियल एनर्जी, कि वो एकदम सॉफ्टली बोलते थे, ही नेवर यूज्ड टू शाउट, राइट? बट अ वेरी इन्फ्लुएंशियल ओरेटर, कि आप उनकी बात सुनोगे, वेरी वेल निटन वर्ड्स विदाउट द फ्लफ ऑफ इट. आप नाउ दैट इज समथिंग कि ही इज बॉर्न टू इन्फ्लुएंस, लेट्स से, सोसाइटी इन अ गुड वे. देन ही नीड्स टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर, राइट? तो वो विज्ञान उनके पास में है. तो दैट इज अ वेरी रिलेटेबल एग्जाम्पल, जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड इट, क्योंकि उनके लिए शायद प्रारब्ध भी उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, या सोल का क्या डेस्टिनी होता है और उसको क्या टूल मिल रहा है. राइट? नाउ दैट इज स्पेसिफिक, लेट्स से, जेनेटिक गिफ्ट टू हिम. एक एग्जांपल अगर मैं उसको साइंटिफिक वे में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूं, कि किसी के पास में एक जेनेटिक एडवांटेज होता है कि किसी का काफ मसल ज्यादा ग्रो हो जाएगा, किसी का बाइसेप ज्यादा ग्रो हो जाएगा. वैसे ही सोल के अंदर बोल सकते हो कि दिस इज एन अनफेयर एडवांटेज, वेयर अगर आप एक पर्पस कर रहे हो, उसके लिए आपके पास एक टूल है जो शायद किसी और के पास नहीं होगा, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू एग्जीक्यूट. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए. अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है, देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. अंटिल देन, कीप ड्रीमिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.